So very good afternoon to all of you. So students, in the today's topic we will study about the various parts of the ovule which show the large megaspore mother cells indulge in them. Okay, what is dyad, what is tetrad megaspores, okay, what are the 2, 4 and 8 nucleated stage of an embryo sac, okay, and mature embryo sac. And we will also study a diagram which will show the how the mature embryo sac looks like. Okay, so before that we must know that what is a megasporogenesis. Okay, so going with the help of the definition, so what is that? The process of formation of megaspores from the megaspore mother cells is called as a megasporogenesis. मतलब क्या है इसका कि जब भी कोई फॉर्मेशन होगा, वेन एवर द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्स से फॉर्म हो जाएंगे फ्रॉम द मदर सेल, लाइक दैट जब मदर बेबी को बॉर्न करवाते हैं, ठीक है, तो लाइक दैट जो मदर है उसी से क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर्स बनते हैं, ठीक है. एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मीन्स दैट कि स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट ovules generally differentiate in single megaspore mother cell. They are just talking about single megaspore mother cells, that is MMC. It is a full form of that, in the micropylar region. Okay, so yesterday I just taught you the anatropous ovule, where the hilum, funicle, micropylar pole, outer integument, inner integument, nucellus, embryo sac, chalaza pole, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है. जो डिपेंड करता है हमारे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे फॉर्म होती हैं, इसी में इन्होंने बात की है दैट माइक्रोपाइलर रीजन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके. Okay, so first diagram is showing us the various kinds of parts of the ovule of the large megaspore mother cell. Okay, first here the micropylar end is present here. Okay, lower to that the nucellus is present. You can see the nucellus are indulged in this. Okay, after that the megaspore mother cell is present here. Okay, after that the dividation will take place. Okay, नेक्स्ट में माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस मेगास्पोर डायाड, ये दो बन गए, ठीक है. वी आर जस्ट कॉलिंग दैट थिंग मेगास्पोर डायाड. ओके, आफ्टर दैट micropylar end is present here. Okay, megaspore tetrad, whenever they will divide, ठीक है, megaspore tetrad, this is the dividation from the 2 to 4. Okay, as you can see the 2 mega spore dyad are present here. After that they have divided and made a megaspore tetrad. Okay, after that in the B cell stage you can just see here the dividing process is continued. Okay, after that in the B region they divide from the 2, 4 and 8 nucleated stage of embryo sac. Okay, and after that only the mature embryo sac will be formed. Okay, first of all यहाँ पे synergies देख रहे हैं आप, ठीक है. After that egg is present here. Okay, center cells जो होते हैं we just call that term central cell. Okay, because they are present in the central portion of the डायग्राम. ओके, मेगास्पोर जो मदर सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. आफ्टर दैट 2 पोलर न्यूक्लियाई, सी यू कैन जस्ट सी हियर 2 पोलर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, 1 and 2. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट कॉलिंग द टर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके, आफ्टर दैट एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, आफ्टर द डिवाइडिंग प्रोसेस, ठीक है, द मेच्योर एम्ब्रियो सैक विल बी फॉर्म, ठीक है, विच विल लुक लाइक एंड द फॉर्मेशन आर लाइक दिस, दैट द इन द अपर पोजिशन द चलाजल एंड विल बी प्रेजेंट हेयर. ओके, आफ्टर दैट एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट. सी एंटीपोडल सेल्स जो थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है. डिवाइडिंग प्रोसेस चालू है, ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको मेच्योर एम्ब्रियो सैक दिखाना है, ठीक है, कि डिवाइडेशन जब होती रहती है उसके बाद एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म हो जाता है. Okay, in the center position you can just see polar nuclei. ठीक है, as you have seen in this diagram 2 polar nuclei, here they are just forming a mature embryo sac. Okay, so that's why they are just calling polar nuclei. ठीक है, after that central cells are present here, also central cells are present, that's why they are just calling here central cells. ठीक है, after that egg is present here. Okay, after that synergids यहाँ पे देख सकते हो आप. Okay, and after that filiform apparatus is found here and the micropylar end you can see here. Okay, so this is the diagram which is showing you the giving the diagrammatic representation of a mature embryo sac.
Okay, so it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. Okay, it is having a dense cytoplasm होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस है, prominent न्यूक्लियस है, ठीक है. The MMC, okay, undergoes mitotic division is very much initiated in this thing, ठीक है. There are two types of division, meiosis and mitotic, ठीक है. So here they are continuing the mitotic division. Okay, so that's why we have just talked about the mature embryo sac. Okay, that how the mature embryo sac look like. Okay.